Hello everyone, this is Shivraj Gurjar, and today we'll take up constant motion. मैंने dynamics along back I have completed that part, but उसमें constant motion बच गया था, ठीक है? So this part is also important. This remained pending due to paucity of time only. ठीक है, so we'll take up this today. This is very easy concept in fact. There are 3 and 4 cases, and out of constant motion there will be 3-4 cases. And along those only questions are framed. ठीक है, there was a question from this topic this year. ठीक है, and in PYQs there are questions related to constant motion. Constant motion. Okay, so let us discuss this. What is constant motion? Constant motion, basically it is something when a particle is compelled to move along a given path, curve or surface. ठीक है, as the name suggests, we are constraining the particle to move along a certain path, then that is constant motion. But for our purpose, what we will study is that the motion of particle is either along a vertical circle or along a planar curve or along a cycloid. Okay, so these will be the certain specific subtypes of constant motion that we will study, and that is only part of the syllabus. Okay. There are around 30 questions in Krishna series on this topic. So if those are practiced, then that will be enough. Okay, and questions are taken directly from that only. So for this also the reference book is Krishna series. Krishna series. Okay, name of the book is Dynamics. This is available online on commerce site as well. Okay, so now, what is constant motion? Okay, if a particle is constrained to move along a curve a surface, then its motion is constant motion. ठीक है, okay. So हमारे for our purpose which we will study in this series is motion along a vertical circle. ठीक है, और planar curves. ठीक है, और साइक्लोइड. ठीक है, इस पर भी PYQs पूछे हुए हैं long back, but there are PYQs from cycloid part also. What will happen in this, that we'll discuss subsequently, that only the radius of curvature will be different for these curves, otherwise the concept will be on the similar lines. ठीक है, okay. So in this what will happen, see, let us say that this is some fixed point and inextensible string is tied to it, and on the other end there is a particle of, let us say, mass m, and mass of this string is negligible. ठीक है, or this the mass is assumed as 0. Basically it is very small, so we can neglect it compared to the mass of particle. It is assumed as heavy particle. ठीक है, so if this is heavy and the mass of string is very negligible, then we can ignore that. ठीक है, and one more thing, this string is inextensible. ठीक है, inextensible, क्योंकि अगर ये एक्सटेंड हो गई तो फिर उसकी वजह से भी इसमें फोर्स कंपोनेंट आ जाएंगे. ठीक है, so basically we'll assume that string is inextensible. The mass which is fixed through this string on the other end is very heavy, and other one end of this string is fixed. And if this mass is given a velocity, a horizontal velocity, let us say u, then the motion which it will trace is something will steady. That is part of constant motion. ठीक है,
So basically what we are saying that one end of string is fixed and a heavy particle of mass m is attached to other end of this inextensible string of negligible mass. ठीक है, so this is the condition. A horizontal velocity, let us say u, is imparted on the particle when it is in equilibrium. ठीक है, in vertical position. ठीक है, इसके बाद जो मोशन होगी that is what we are supposed to study and that is constant motion. ठीक है, to study the subsequent motion. ठीक है, सो देखो अब इसमें सिंपल फोर्स बैलेंसी के कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सो दिस इज द, ठीक है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मान लो दिस इज द फिक्स्ड एंड, इससे एक स्ट्रिंग है, ये फिक्स्ड ये स्ट्रिंग है जिसकी की लेट अस से लेंथ, ओके लेट अस से लेंथ ए है इसकी. ठीक है, और यहाँ पे मास जो है एम मास का एक पार्टिकुलर टेस्ट है. दिस स्ट्रिंग इज inextensible. Now a velocity v u is imparted here when this particle is in vertical position, then we are asked to study its motion. ठीक है, तो देखो ये चीज है, ये दिस कॉन्फिगरेशन इज एट t equals to 0 and this is a position of equilibrium. ठीक है, this is given in the question and this is the time when we are imparting velocity u equals to v equals to u. Let us say this is the position of t equals to t when we have imparted velocity u, but because the string is inextensible and length is constant, so it will be compelled to move along a circle. ठीक है भाई, अगर दो टू पॉइंट्स, भाई अगर टू पॉइंट्स भी है फिक्स्ड, ठीक है, इफ टू पॉइंट्स आर फिक्स्ड देन जो इसका बेसिकली फोकस होगा, लोकस होगा, दैट विल बी सर्कल. By this point is fixed, sorry, let us say this is z nor and this is some z, then modulus z minus z nor is a. So this locus of z is nothing but a circle जिसका कि सेंटर z nor है एंड रेडियस a. सो वही यहाँ पे हो रहा है. तो देखो इसको लेट अस से थीटा, t इक्वल्स टी पे, ये थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे जो मास होगा वो इस टाइप से इस पे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मास एक्टिंग ऑन इट. So let us extend this. So of course this and this are parallel, so this will be theta as well. अब इस mg को अगर हम इसको components में divide किया जाए, ठीक है, so this will be mg cos theta and this will be mg sin theta, right? अब देखो, अब ये इस टाइप से इसका मोशन हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये टाइम t पे वेलोसिटी v है मान लो. अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो अगर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन,
तो वो क्या होगी देखो। अच्छा ये स्ट्रिंग है, सो देयर विल बी टेंशन एज वेल। ठीक है, टेंशन तो इसमें हमेशा ही रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, सो ये जो टेंशन होगा, तो देखा जाए तो इन द रेडियल डायरेक्शन दिस टी इज वर्किंग एज वेल एज एम जी कोस थीटा इज वर्किंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर इसमें देखो अलोंग रेडियस, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाए तो ये क्या आएगा, टी माइनस एम जी कोस थीटा equals to mv square divided by rho, where rho is radius of curvature. This concept I have discussed in central orbit. ठीक है, कि this will be the central acceleration, v square by rho is central acceleration, so t minus mg cos theta will be mv square by rho. अगर इस concept में you have problem, you may refer those lectures dynamics के ही। ठीक है, अब देखो ऐसे ही perpendicular to tangent radius, perpendicular to radius vector। ठीक है, अच्छा देखो ये जैसे मान लो ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे ये हमने आर थीटा ले लिया, तो ये जो थीटा है, ठीक है, दिस एंगल इज आल्सो नोन एज वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसा भी आ जाता है, दिस इज वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, और यहाँ पे जो टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए इस पॉइंट पे जो कर्व है, तो ये एंगल लेट अस से दिस इज साई, देन दिस साई इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जैसे आ जाते हैं कि व्हाट विल बी द angular velocity or angular acceleration of the direction of motion of the particle। ठीक है, so give attention to it। it is not asking angular acceleration of particle but angular acceleration of direction। ठीक है, so इस टाइप की चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है, जनरली वी डिनोट दिस बाय पाई। ठीक है, तो ये जो पीडल फॉर्म्स होती है कर्व्स की, जैसे पैराबोला की पी स्क्वायर बाई ए आर होती है, इन सब में ये सब का यूज है। ठीक है, फाई थीटा एंड साई के बीच में जो रिलेशन है। ठीक है, फर्दर वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट डी एस ओवर टी साई, वेयर दिस डी एस इज नथिंग बट द स्मॉल एलिमेंट ऑन द आर्क लेंथ। ठीक है, सो ये सब है, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, सेंट्रल ऑर्बिट एंड रेक्टेंगुलर मोशन जो भी डिस्कस किया सेंट्रल ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट में, दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। अब देखो अगर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इफ वी राइट, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा इज वर्किंग in this direction and particle is moving in the opposite direction. So basically if we balance forces here, so this will be minus mg sin theta equals to d square s dt square. This is the acceleration, this is the tangential acceleration। ठीक है, tangential acceleration। There is a lecture with the name of tangential acceleration as well। ठीक है, you may refer that, there is a lecture on central and सेंट्रल एक्सलेशन एज वेल। सो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, सो ये हमने ऐसे लिखा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस डी एस डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एम जी साइन थीटा इज ऑपोजिट टू डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर, जिस डायरेक्शन में कि पार्टिकल इज मूविंग। ठीक है, बस अब यहाँ से वी कैन एलिमिनेट थिंग्स एंड वी कैन गेट टी एज वेल एज वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्दर, क्योंकि ये सर्कल है, फॉर सर्कल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ इट, तो इसकी रेडियस तो हमने ए एज्यूम की है। तो देखो इसको अगर सोल्व किया जाए, सो टी इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई रो। ओके, और ये जो है देखो इसमें एम जी साइन थीटा माइनस डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के लिए व्हाट वी नीड दैट दिस द आर्क लेंथ एस नीड्स टू बी reflected in terms of theta, so for that we need a relationship between this arc length। let us say कि ये जो है इसने दिस एस आर्क लेंथ इसने ट्रेवल किया टी टाइम में, तो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, थीटा इज नथिंग बट दिस आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस विच इज ए, और वी कैन से दैट दिस आर्क लेंथ इज नथिंग बट ए थीटा। तो यहाँ से डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट ए डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, ऐसा हम वी कैन राइट। ठीक है, सो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सो दिस इज नथिंग बट माइनस ए डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर।
Now this is equation in theta which can be solved. कैसे? दोनों तरफ if we multiply by d theta और dt, sin theta d theta और dt minus a d theta और dt d square theta dt square. ठीक है. Now let d theta over dt is let us assume this as phi, या इसको ओमेगा बोल देते हैं. ठीक है. सो होगा भी ओमेगा ही, एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. सो इसको वी कैन राइट एम जी साइन थीटा. ठीक है. ओके, लेट अस फर्स्ट इंटीग्रेट इट विद रेस्पेक्ट टू टी. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. अब डी, अब देखो ये तो हो गया एम जी साइन थीटा डी थीटा, डी टी से डी टी गया माइनस ए. अब देखो डी थीटा और डी टी को इफ वी पुट ओमेगा, देन from this we can say that d square theta dt square is nothing but t omega or dt. So a omega d omega or dt or dt is already there. Okay, so this is minus a only one a omega d omega. ठीक है, ये हो गया हमारे पास एम जी साइन थीटा डी थीटा. नाउ सी, इन दिस वी कैन से दैट व्हेन थीटा इज जीरो, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो वेलोसिटी इज यू. ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, यहाँ से वी कैन से arc length is a theta, so velocity is nothing but ds over dt, which will be a d theta over dt. So जब थीटा जीरो है तो वी यू है, मीन्स a d theta over dt is u. यहाँ से वी कैन से दैट d theta over dt is u by a. दिस इज वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, सो इसका विल यूज दिस. सो व्हेन थीटा इज जीरो, d theta over dt is u divided by a. भाई ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा और डी टी, यही एज्यूम किया हमने. So when theta is theta, let us say that this omega is omega. So now sin theta integration is cos theta minus cos theta in fact. So this will be 1 minus cos theta. ठीक है, और ये हो गया माइनस ए बाई टू ओमेगा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर. और यहाँ से वी कैन से दैट 2 minus a square, so 1 minus 2a ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, और वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस कोस थीटा. राइट. ओके, yeah, this mg, this is the acceleration, so we have to multiply this by m as well, by x. फोर्स तो m इंटू एक्सलेशन होगा ना, लेट अस से. सो m से ये मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सो दिस m विल कैंसिल विद दैट m. ठीक है, बट दिस g विल बी देयर. m will be cancelled out but g will be there, so here this g will be there. ठीक है, so this 2ac minus, so from this, अच्छा, further we know that a d theta or dt is nothing but velocity at time t, that we have seen. So this is nothing but a d theta or dt only, so this is v square is equals to u square minus 2ac 1 minus cos theta. So this is the velocity at any time t. This is important. ठीक है. If question is asked, generally questions from constant motion will be 15 or 20 marker, then we have to derive this expression. So this is a velocity at time t. ठीक है, velocity of particle
टी इक्वल्स टू टी एंड थीटा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, देखो इसको और सिंपल तरीके से भी वी कुड हैव डिराइव्ड, कैसे, एनर्जी इक्वेशन से। ठीक है, एनर्जी वर्क एनर्जी इक्वेशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन से कैसे। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप से पार्टिकल मूव कर रहा है, इनिशियली इट वाज हियर एट टी इक्वल्स टू टी, पर दिस इज हियर। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वाज u, हियर इट्स वेलोसिटी इज v। नाउ सी the only force we can see here, one is t and the other force is mg, which will always act in vertical direction towards negative y direction. If we assume x and y like this, then this mg will always act towards the negative y direction. So work done by forces is equals to work done by mg only. ठीक है, because tension won't do any work. That is so because particle is moving perpendicular to tension, perpendicular to the direction of tension, and we know that the work is nothing but f dot dr. So अगर direction ही perpendicular है तो ये क्या हो गया, f dr cos theta. If theta is 90, then this will be 0. So tension does no work here, as work by tension is 0. ठीक है, तो the only work which will be done is by mg. Further we know that work done by mg क्या होगा, force into displacement in direction of force। ठीक है, सो ये क्या होगा, देखो mg और mg की डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इनिशियली यहाँ है, अभी यहाँ आ गया। सो बेसिकली हमें देखना है सिर्फ mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दिस टोटल लेंथ इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज a, this is of course a, but this is theta, this is 90. So let us say this is o, this is a, and this is, let us say p। ठीक है, देन op क्या होगा, op is nothing but a cos theta. This is right angle triangle. From this in this angle, this triangle we can say that this op is nothing but a cos theta. ठीक है, सो इसमें अगर देखा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा हमारे काम का है भाई, यहाँ से ये यहाँ मूव हुआ। सो ओनली दिस AP part is useful for us. This will do the work. So अच्छा, further the displacement is in the direction opposite to the force, means displacement इस डायरेक्शन में हो रहा है, force इस डायरेक्शन में। So this will be the negative work। ठीक है, F dot dr है, यहाँ पे थीटा पाई हो गया बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दिस विल बी माइनस एफ डी आर। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस एम जी, और ए पी क्या है, ए पी इज नथिंग बट, ए पी क्या है, ओ ए माइनस ए पी, ओ ए इज ए माइनस ए पी इज, ये ओ पी माइनस करना पड़ेगा ना, ओ ए माइनस ओ पी विल बी ए पी, हमें ए पी चाहिए, दिस इज ए कोस थीटा। सो दिस इज ए माइनस वन, ए टाइम्स वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन ड्यू टू द फोर्स एम जी। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एट टी इक्वल्स टू जीरो क्या होगी, 1/2 मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो पे यही होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब टी इक्वल्स टू टी पे अगर देखिए काइनेटिक एनर्जी एट टी इक्वल्स टू टी, तो देट विल बी 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये होगा। तो देखो x क्या है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो दिस विल बी, अगर जिसको इसको इफ वी एज्यूम 0 0, then y is a cos theta and x is a sin theta. So basically x is this a sin theta and y is minus a cos theta। ठीक है, so this is the coordinate of this। तो वेलोसिटी क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी ओ डी टी। सो दिस विल बी ए कोस थीटा, थीटा डॉट। ठीक है, और ये हो गया माइनस प्लस ए साइन थीटा
थीटा डॉट, ये वेलोसिटी हो गई, इसका मॉडुलस वी नीड, सो दैट विल बी ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, so this is a theta dot. Okay, so this will be a theta dot, so 1 by 2 m a theta dot का स्क्वायर, और वी कैन से 1 by 2 m a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर. अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो. बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, change in kinetic energy is nothing but work done, so change in kinetic energy is 1 by 2 m a square theta dot square equals to okay minus initial kinetic energy क्या है 1 by 2 m u square equals to work done, that is minus m g a 1 minus cos theta. Okay, so बस अब इसको सोल्व किया जाए अगर, further we know that this is nothing but v square only, so directly we could have written that this is the 1 by 2 m v square. सो ये हो गया हमारे पास वी स्क्वायर एम से एम थ्रू आउट कट गया इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 GA 1 माइनस कोस थीटा विच इज आल्सो ए थीटा डॉट का स्क्वायर. सो द सेम इक्वेशन वी गोट दिस वे एज वेल. ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. अब हमें टेंशन भी वी कैन गेट. टेंशन तो वी नो, हमने अभी ये देखा है कि टी माइनस एम जी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर डिवाइड बाई रो विच इज ए हियर ड्यू टू सर्किट प्लस एम जी कोस थीटा. ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन वी हैव जस्ट रिटन. अब यहाँ पे m डिवाइड बाई a, v स्क्वायर की जगह वी कैन राइट दिस u स्क्वायर माइनस 2GA 1 माइनस कोस थीटा. ठीक है, प्लस यहाँ से m बाहर लेंगे तो ये az कोस थीटा हो गया. ठीक है, सो दिस इज m डिवाइड बाई a u स्क्वायर माइनस 2az प्लस 3az कोस थीटा, ये हो गया t. ठीक है, yeah, so one expression is this. The full constant motion is game of only these two expressions, expression for velocity and expression for tension. देखो जो भी हमने अभी डिस्कस किया same thing will be valid even for a, let us say this is a sphere, a cell. ठीक है, this is a cell or inside it there is a particle kept inside this, and this is initially this is here and this is imparted a velocity u, and this moved along this surface, and at t equals to t, let us say this is here, so same equation will be applicable here as well. The mg mass here, the only difference will be that here the reaction will be there. Reaction we can denote that by n or r. ठीक, the tension will be replaced by the reaction, a normal reaction. ठीक है, everything will be same, just tension will be replaced by reaction. ठीक है, ओके. सो दोनों टाइप से क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. आई होप क्लियर है. सो बस ये दोनों चीज़ें जो कि विल यूज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2az 1 माइनस कोस थीटा. दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू t, एंड टेंशन और रिएक्शन जैसा भी केस है. ठीक है, टेंशन और रिएक्शन. ठीक है, दैट विल बी m डिवाइड बाई a u स्क्वायर माइनस 2az प्लस 3az cos थीटा. ओके, या ओके. अब इसके वेरियस केसेस वी हैव टू सी.